से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिविल सेवक सरकार और जनता के बीच की सबसे अहम कड़ी है। उसके बगैर सरकार की नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी मुमकिन नहीं है, जिसके लिए सिविल सेवक की रचनात्मक, पेशेवर, संवेदनशील और आधुनिक सोच जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ये विजन रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जिससे सरकार के जनहित से जुड़े प्रयास जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से पहुंच सके। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री ने मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की। मिशन कर्मयोगी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। मिशन कर्मयोगी योजना को 2022 में सरकार ने मंजूरी दी थी। इस योजना के माध्यम से अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कर्मयोगी योजना का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, पेशेवर और तकनीकी उन्मुख बनाना है, जिससे क्षमता के अनुसार काम कर सके। मिशन कर्मयोगी देश में मानव संसाधन क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा सुधार है। इसके माध्यम से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का क्षमता विकास किया जा रहा है। इस योजना को लाने के पीछे का उद्देश्य जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना है और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करना है, जिससे वो समाज सेवा में बेहतरीन योगदान दे सके। प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी को क्षमता विकास की दिशा में अपनी तरह का नया प्रयोग बताया। सिविल सेवा के इंटीग्रेशन का सही मायने में आरंभ अब आप सभी साथियों के साथ हो रहा है। ये आरंभ अपने आप में एक रिफॉर्म है। मैं इससे जुड़े तमाम अधिकारियों, तमाम साथियों को भी बधाई देता हूं। आप सभी ट्रेनिंग का विस्तृत एक्सपोजर हो, एक कोशिश भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन राष्ट्र के लिए कर्मयोगी के रूप में ऐसे सिविल सेवक तैयार करना है जो पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ ही सृजनशील और रचनात्मक हो। इस प्रशिक्षण के जरिए अति सक्रिय, विनम्र, ऊर्जावान और समर्थ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पेशेवर और प्रगतिशील बनेंगे। उनके अंदर कल्पनाशीलता और नव प्रवर्तनशीलता विकसित होगी। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। मेरा यह भी मानना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग कुछ महीनों की औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग और लर्निंग से जुड़ा क्वालिटी मटेरियल हर जगह, हर समय उपलब्ध हो, इसके लिए iGOT प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब सभी नए रिक्रूट्स को iGOT पर कर्मयोगी प्रारंभ के ओरिएंटेशन मॉड्यूल के साथ भी ट्रेन किया जा रहा है। कर्मयोगी मिशन के 6 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें निरंतर सीखने और ड्राइविंग दक्षताओं पर ध्यान देने वाली नई प्रशिक्षण नीतियां शामिल हैं। स्वदेशी योग्यता ढांचे के साथ नियम से भूमिका में बदलाव और पीएमएचआर काउंसिल द्वारा निरीक्षण किया जाता है। मिशन के तहत बड़े पैमाने पर व्यापक शिक्षण मंच, सामरिक मानव संसाधन प्रबंधन, सतत प्रदर्शन विश्लेषण, डेटा संचालित लक्ष्य निर्धारण और वास्तविक समय की निगरानी की जाती है। कर्मयोगी मिशन का उद्देश्य पदों की आवश्यकताओं के अनुरूप सिविल सेवकों की दक्षताओं का मिलान करते हुए भूमिका आधारित मानव संसाधन प्रबंधन में परिवर्तन को सुचारू बनाना है। ऑफ साइट के साथ ऑन साइट सीखने पर भी जोर देना है।
शिक्षण सामग्री, संस्थानों और कर्मियों सहित साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का एक इकोसिस्टम बनाना है। सभी सिविल सेवा पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षता के दृष्टिकोण से एक ढांचे में कैलिब्रेट करना है। बीते वर्षों में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को एक और बंधन से मुक्ति दिलाई है। ये बंधन का प्रोटोकॉल और हायरार्की का बंधन। आप जानते हैं कि हायरार्की के बंधनों को तोड़ने की शुरुआत भी मैंने खुद की है। मैं लगातार सेक्रेटरी से लेकर के असिस्टेंट सेक्रेटरी तक से मिलता हूं। मैं ट्रेनी अफसरों के साथ मुलाकात करता हूं। हमने डिपार्टमेंट के भीतर हर किसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए, नए आइडियाज के लिए केंद्र सरकार ने भी चिंतन शिविर को बढ़ावा दिया। हमारे प्रयासों से एक और बड़ा बदलाव है। पहले वर्षों तक राज्यों में रहने के बाद ही अधिकारियों को डिप्यूटेशन पर केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव मिलता था। ये किसी से और किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर इन अधिकारियों के पास केंद्र सरकार में काम का अनुभव ही नहीं होता तो वो केंद्र के प्रोग्राम्स को जमीन पर लागू कैसे करेंगे। हमने असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के जरिए इस गैप को भी भरने का प्रयास किया। अब युवा आईएएस अपने कैरियर की शुरुआत में ही केंद्र सरकार में काम करने का, उनके अनुभव लेने का मौका मिलता है। सीनियर मोस्ट लोगों के साथ उसको कुछ सीखने को मिलता है। हमें इस तरह की इनोवेशंस को आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों को परिणामों के लिए और शिखर पर ले जाने के लिए निरंतर कोशिश करें। कर्मयोगी मिशन के तहत प्रत्येक सरकारी इकाई में पहचान की गई FRAC के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री बनाने और वितरित करने का काम किया जा रहा है। कर्मयोगी मिशन सभी सिविल सेवकों को उनके व्यवहार, कार्यात्मक और डोमेन दक्षताओं को लगातार मजबूत बनाने के अवसर उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और उनके संगठन को प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय सदस्यता के माध्यम से सीखने के तंत्र को साझा करने के लिए सीधे अपने संसाधनों का निवेश करने में सक्षम बना रहा है। सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत विशेषज्ञों सहित सर्वश्रेष्ठ इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर्स के प्रोत्साहन और उनके साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी से आने वाले समय में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय के लगभग 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को सीधे फायदा मिलेगा। साथ ही काफी अधिक लाभार्थी सकारात्मक रूप से इससे प्रभावित होंगे। इस कार्यक्रम में उन लाखों नागरिकों पर भी प्रभाव पड़ेगा जो सिविल सेवा के जरिए सशक्त होते हैं। मिशन कर्मयोगी योजना के जरिए सरकारी कर्मचारियों का स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये योजना एक कौशल निर्माण कार्यक्रम है। योजना को लाने के पीछे का उद्देश्य जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाले अधिकारी तैयार करना है। आइए नजर डालते हैं इसके अब तक के सफर पर। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विशिष्ट भूमिका, दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी रूपरेखा तय की। इसी साल BOPT योग्यता ढांचे का शुभारंभ किया गया। साल 2017 में उप जिला स्तर के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा प्रशिक्षण पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल की शुरुआत की गई, जबकि 2018 में आई गॉट लर्निंग प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया। साल 2019 के आरंभ में पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन कर्मयोगी का शुभारंभ किया। मिशन कर्मयोगी या सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर मौजूदा क्षमता निर्माण ढांचे में व्यापक सुधार लाना है। इसमें प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद यानी PMHRC,
क्षमता निर्माण सुधारों की रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय है। वहीं कैबिनेट सचिवालय प्रगति और निष्पादन की निगरानी और योजनाओं की निगरानी के लिए समन्वय इकाई, जबकि क्षमता निर्माण आयोग प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य स्थापित करने, साझा संकाय और संसाधन बनाने और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी करने के लिए। वहीं कर्मयोगी भारत स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आईगॉट कर्मयोगी का स्वामित्व और संचालन और विश्व स्तर की शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है। मिशन कर्मयोगी का मकसद एक ग्लोबल लीडर यानी दुनिया का सबसे बड़ा क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जिसमें केंद्र में 46 लाख कर्मचारी शामिल होंगे और अंततः केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों में 1.5 करोड़ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। समय पर बेहतर सेवा वितरण, नागरिकों को ये आश्वासन दिया जाएगा कि उनकी प्राथमिकताएं ऐसा करने के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षित अधिकारी द्वारा प्रबंधित की जा रही हैं। इससे जनता की संतुष्टि में काफी सुधार होगा और शिकायतें दूर होंगी। नागरिक प्रसन्नता भावना में सुधार, सिविल सेवकों की व्यावहारिक दक्षताओं को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम, विशेष रूप से अत्याधुनिक स्तर पर जहां नागरिक एक सार्वजनिक अधिकारी के साथ बातचीत करते हैं, नागरिक को एक सुखद और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करेगा। डिजाइन द्वारा जवाबदेही और पारदर्शिता, क्षमता निर्माण प्रयासों के परिणामों का मूल्यांकन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मानव संसाधन परिषद द्वारा किया जाएगा और व्यापक वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से नागरिकों के साथ साझा किया जाएगा। स्थानीय समस्या ग्लोबल व्यू, भारतीय मूल्यों के साथ वैश्विक शिक्षा पर कार्यक्रम का फोकस अधिकारियों को सर्वोत्तम उपलब्ध ज्ञान का उपयोग करके स्थानीय समस्याओं के लिए समाधान तैयार करने और विकसित करने में सक्षम करेगा। मिशन कर्मयोगी योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना का उद्देश्य सिविल सेवकों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है। यह योजना एक कौशल निर्माण कार्यक्रम है। इस योजना के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के काम करने की शैली में भी सुधार आएगा, जिससे अधिकारियों का प्रदर्शन बेहतर होगा। मिशन कर्मयोगी योजना 2022 पर कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। इस योजना के माध्यम से अधिकारियों को कई तरह के ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। मिशन कर्मयोगी क्षमता निर्माण की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस मिशन का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सोच और दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के साथ ही उनके कौशल को निखारना है, जिससे वो सही मायने में कर्मयोगी बने। 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली में आयोजित सिविल सर्विस डे के मौके पर सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए सितंबर 2020 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी की तारीफ करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये अभियान नए भारत की दृष्टि के अनुरूप सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा को और बेहतर बनाने में परिवर्तनकारी बदलाव साबित हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल के वर्षों में सिविल सेवकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मिशन कर्मयोगी, a national program for civil service capacity building launched in September 2020, is turning out to be a game changer, shaping future-ready civil service with the right attitude, skill and knowledge aligned to the vision of New India. And it is impacting even people who are at the lower rank of working for the government. Their capacity is being enhanced. They are being motivated, inspired. And when this has happened, you will see a different kind of smile on their face. That the system is helping them to improve themselves. You are significant stakeholders in ensuring progress of the nation and so positioned to improve the lives of our citizens. You are the most visible and effective agents of change that is dotting our landscape. Civil service is the backbone of our government and plays a crucial role in smooth running of the nation. You in America
and some of you are warriors of 2047, laying foundations that will shape Bharat when it celebrates its centenary of independence. In recent years, to enhance work efficiency of civil service, series of steps have been taken, securing increased flexibility in mechanisms and modalities of implementation policy directives, rationalization of multiplicity of accountability, and firm defining of goals and benchmarks to be achieved, thereby providing a clear perspective vision that is quintessence of any development. वहीं संसद भवन परिसर में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने कार्य निष्पादन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। नवीनतम तकनीक से अवगत रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए समय के साथ तालमेल बिठाने का आह्वान किया। Unless you change with times, you will be left behind. और इसमें एक चीज है टेक्नोलॉजी, उसमें हमने 3-4 समय के अनुसार चेंज किया है। To be in tune with the times, to fully utilize the technology which is developing, और गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स में हुआ है। So we don't want to be left behind. We are number one. तो एक भाई यूजिंग टेक्नोलॉजी। राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों ने बहुत कम समय में iGOT कर्मयोगी अध्ययन प्लेटफॉर्म पर 3,261 पाठ्यक्रम पूरे करके एक नया मानदंड स्थापित किया है। There has been a major shift in the approach to capacity building of the employees of the Secretariat. The ongoing exercises with the Capacity Building Commission, the onboarding of Rajya Sabha Secretariat in the iGOT platform, the seamless movement of orders across the Secretariat due to the HR revamp exercise. मिशन कर्मयोगी के तहत संसद के सचिवालय के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के कई कोर्स उपलब्ध हैं, जिसका फायदा बड़ी तादाद में संसदीय सचिवालय के कर्मचारी उठा रहे हैं। इसमें संसदीय कामकाज, नेतृत्व क्षमता वृद्धि, डिजिटल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे कई कोर्स उपलब्ध हैं। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के तहत 1 मई 2023 तक राज्यसभा सचिवालय के 1,878 कर्मचारी ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। दक्षता बढ़ाने के मकसद से 11 कोर्स में करीब 1,300 कर्मचारी ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसमें नोटिंग और ड्राफ्टिंग, संसदीय कामकाज, सूचना का अधिकार कानून, राजभाषा हिंदी, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और रणनीति जैसे कोर्स शामिल हैं। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवक को अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाकर तैयार करना है। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग यानी IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 418 लाइव कोर्स मौजूद हैं, जिसमें 820 घंटे से अधिक का कंटेंट है। इसमें अब तक 4.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कर्मयोगी मिशन में सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के कई मॉड्यूल लॉन्च किए गए, जिसमें विभिन्न कोर्स थे। सरकार में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों के प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया था। ये पहल प्रारंभिक चरणों में सरकारी कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करने और उन्हें मिशन कर्मयोगी के हिस्से के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में सक्षम बनाने का अवसर प्रदान करती है। प्रारंभ मॉड्यूल में 8 कोर्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रभावी संचार, सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता और सेल्फ लीडरशिप जैसे कोर्स शामिल हैं। कर्मचारियों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके साथ ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए
कानून की जानकारी, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन और तनाव प्रबंधन से जुड़े कोर्स शामिल हैं। इसी तरह दक्षता मॉड्यूल के तहत 10 कोर्स का संकलन किया गया है। इसमें अवकाश नियम, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, सूचना का अधिकार कानून, ऑफिस प्रोसीजर और सरकारी कर्मचारियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट शामिल है। इसके अलावा पे फिक्सेशन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट और पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया जाता है। शक्ति मॉड्यूल में योगा फॉर एक्सेलेंस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्कप्लेस, सुकन्या समृद्धि खाता, लैंगिक समानता और विकास कोर्स हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्सेज भी शामिल किए गए हैं। iGOT कर्मयोगी में वाई ब्रेक 5 मिनट योगा एट वर्कप्लेस मॉड्यूल में योग से जुड़े कई कोर्स शामिल किए गए हैं। इन सभी कोर्स के जरिए भविष्य के लिए सिविल सेवक तैयार किए जाते हैं और उन्हें एक गतिशील वातावरण मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर कई और कोर्स उपलब्ध हैं, जिनकी ट्रेनिंग लेकर कर्मचारी और अधिकारी अपने हुनर और क्षमता को बढ़ा सकते हैं। रोल इन कोर्स करने के लिए आपको igot-कर्मयोगी.gov.in पेज पर जाकर स्वयं रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर पर क्लिक करने पर नया पेज खुलता है, जिसमें नए यूजर को रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी भरनी पड़ती है। एक्टिवेशन पर क्लिक करने पर लिंक यूजर्स की ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। पासवर्ड बनने के बाद एक्टिवेशन का काम पूरा हो जाता है। इसके बाद साइन इन कर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। डिटेल्स भरने के बाद उसे सेव कर लें। इसके बाद आप कोर्स लर्निंग शुरू कर सकते हैं। मोबाइल के लिए आप igot-कर्मयोगी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hello there, you're watching India Global on NDTV. I'm Maha Siddiqui. The next half hour is packed with all the big international stories of the week and those that directly matter to India. But before the details and the analysis, a look at the big stories making global headlines. Former US President Donald Trump faces a second indictment, this time over alleged mishandling of classified documents
But the 2024 presidential aspirant brazens it out, says he's the target of a witch hunt. Senior American officials make their way to New Delhi ahead of Prime Minister Modi's first state visit to the US. NSA Jake Sullivan in India next week after Defense Secretary Lloyd Austin prepares the ground for a possible joint production of GE jet engines with HAL. Agreement likely to be announced on 22nd June after a clearance from the US Congress. 700 Indians face an uncertain future in Canada after being duped by agents in Punjab, sit on a protest as they face deportation over allegations of having studied on fake offer letters from universities. India takes up the matter with Canada. Big story at the moment. Troubles mount for former US President Donald Trump. He will now be indicted on charges of mishandling of classified documents and violation of Espionage Act. But despite the setback, Donald Trump remains brazen. He calls himself innocent and the target of a witch hunt. Sadly, we're a nation in decline, and yet they go after a popular president, a president that got more votes than any sitting president in the history of our country, by far, and did much better the second time in the election than the first. And they go after him on a box's hoax. I'm an innocent man, I'm an innocent person. They had the Mueller hoax, the Mueller report, and that came out, no collusion after 2.5 years. That was set up by Hillary Clinton and Democrats. But this is what they do. This is what they do so well. If they would devote their energies to honesty and integrity, it would be a lot better for our country. So what are the charges against Donald Trump in this second indictment? The first charge is of willful retention of national defense information for documents that were found in Mar-a-Lago in his estate in Florida. Now, the second charge against him is that of, in fact, as you can see those details coming in, of conspiracy as well, because he was trying to obstruct justice, as they claim that he did not cooperate in this matter. Withholding a document or record, corruptly concealing a document or record, these are the other two charges against him in this case. Concealing a document in a federal investigation, that's another charge. A scheme to conceal false statements and representation. So a total of 7 charges against Donald Trump. This is the second case in which he has been indicted. Remember, he's also been impeached twice, but of course that did not go through via the Senate. So troubles have been actually tracking Donald Trump down for the last few years. But what does it mean, especially now, as he's trying to bid for a second presidential term in 2024? Can this indictment affect his presidential bid? Well, not constitutionally in the US. He will not be prevented from running for the post of the president in 2024. In fact, many Republicans believe that in the primaries, it might only boost his chances because of the sympathy that he might garner by calling this entire case a witch hunt against him. Meanwhile, there are others. There are other Republicans as well who believe and who have warned that in the long run this could hurt him. Why? Because even though he might be able to be the presidential candidate for the Republicans, he might end up losing the overall battle, that is the battle for 2024. So this is what is in store for Donald Trump at the moment. What we can clearly see is that Donald Trump's troubles are mounting. However, he is willing to brazen it out. We are now turning our attention to the other big story that we are tracking, directly impacting Indians. A Canadian parliamentary committee has voted unanimously to urge the border services agencies to stop the deportation of nearly 700 Indian students who were duped by unscrupulous education consultants in India to enter the country with fraudulent college admission letters. The Indian students, mostly from Punjab, have been protesting the move to deport them. External Affairs Minister S. Jaishankar Neelbagi said that the Indian mission is in touch with the Canadian side to resolve this matter.
In the biggest immigration scam of Punjab, according to the state government, close to 700 Indian students in Canada facing the risk of deportation. Canadian authorities say these students got visas on the basis of fake admission letters. Students from Canada's Brampton say they have been given less than a month's time to leave Canada. The life of all the international students are at stake. The few students are coming in front. Many organizations did their research and surveys. They found 50, 60 students. But some people, some students, they are suffering in silence. We have all the proofs, we have all the arguments, facts, which can prove us innocent. Right? But still, the students are getting deportation dates. You know how expensive is the study in Canada. Their families, they put their whole life saving in this to finance the education here in Canada. So that's the main thing. We have to do something. They are the big colleges for which we got the offer letters at first. Even a normal student can change the college here. The only thing is we changed our college. We went to another college. We completed our study over there. Everything is normal in our file. It's just 4 years later they are saying this. The Indian External Affairs Minister assured help in coordination with the Canadian Prime Minister, while it's still not clear how many alleged fraud cases are genuine. If there were people who misled them, the people who misled them, the culpable parties should be acted against. It is unfair to punish a student who undertook their education in good faith. If a student has done no wrong, they accept the idea that they have to find some solution for it. So we will continue to press, and I would very much hope that the Canadian system is fair in that regard. Our focus is on identifying the culprits, not penalizing the victims. Victims of fraud will have an opportunity to demonstrate their situation and present evidence to support their case. While the Canadian Prime Minister, the local MP, Mayor and Councillor have come out in support, these students say there is no real help from the Canadian government yet. Close to 2 lakh students from India go to Canada every year for higher studies. But as Indian students dream for international exposure, these stories highlight how their dreams make them vulnerable to frauds. And at the end, they're left helpless in a foreign country that was once their path to realize their dreams. Priyanshi Sharma for NDTV. And there are mounting woes for those looking to study abroad. 2 more Australian universities now have put a ban on enrolling students from states like Punjab and Haryana. This over what they believe are visa frauds and concerns around the visa frauds that they have been talking about. The Federation University in Victoria and the Western Sydney University in New South Wales are 2 of the new universities, institutions in Australia who are now putting a ban on students, especially from Punjab and Haryana. Meanwhile, those headed to Shanghai in China may have to shell out 54% more in fees from this September. The fees hike across provinces in China has been 15 to 54%. So US, UK are the other places that many of the Indian students go to. On the other hand, there is some development in UK as well, where students headed there will no longer be able to take their families along as well. UK Home Secretary Suella Braverman, in a written statement to the House of Commons, has said that only international students on postgraduate courses currently designated as research programs will be allowed to bring in their family members, including children and elderly parents, as their dependents. Is this move likely to impact what UK calls the living bridge with India? That is the big question over here. Let's go across now to the UK IBC chief, Richard McCallum, who's joining us on the show. Richard, many thanks for speaking with NDTV. First of all, is it likely to adversely impact the movement of students from India to the UK? I think the first thing to say is that student mobility between the UK and India has been a hugely positive story. I think we had about 125,000 students from India studying in the UK in the last academic year, and something like 160,000 visas issued to Indian students up until September 22.
Of course, I'm disappointed by these restrictions, but it's worth bearing in mind, I think, that it won't affect the majority of Indian students studying in the UK. The post-study work visa remains in place. There's no limit to the number of Indian students who can visit the UK to study. And UK universities really want to encourage more Indian students to come work there. And there will be exceptions for students undertaking certain postgrad courses that are deemed as research programs. You know, is the UK IBC keen on taking up this matter with the government, considering that the government itself calls the people-to-people contact the living bridge between India and the UK? Well, when the matter was first raised back in November 22, we did, on behalf of our members, we wrote to various UK government departments about the extraordinary benefits which Indian students bring to the UK. You know, Indian students, international students, all international students bring about £26 billion a year to the UK economy, and they improve academic and research strength in the sector, and they bring diversity and benefits to the campuses, and they bring skills which we need. I think it's worth mentioning, though, in the wider context, that in 2022, the UK issued about 2.8 million visas, and 25% of all those went to India. And student visas went up by about 73% in 2021. And work visas increased by about 130% as well in the same period. So I think, you know, it's a largely positive story in terms of the living bridge between the UK and India. Richard McCallum, many thanks for speaking with NDTV on India Global. So we've taken a look now at the UK and what this could mean. Let's take a look now at the US, where a lot of students go for studies as well. US has promised to make the path easy for students. They've said that last year, 1,25,000 Indians were issued students' visa, which is more than those that were issued to any other nationality. In fact, 1 out of every 5 student visas were issued in India last year. This year, they say that they will interview more students than ever before. More Indians come to the United States as students than students from any other country in the world. Last year, India became #1. And I don't see years ahead that changing for the future. I see that relationship at the very top of how we articulate our values of welcoming not just Americans to higher education to pursue their dreams, but opening up that door to people from around the world, and specifically here in India, where the Indian dream mirrors the American dream. Let's turn our attention to the other big story that we are continuing to track, that of the developments in the run-up to Prime Minister Modi's state visit to the United States. Now, senior American officials are making their way to New Delhi ahead of the Prime Minister's first state visit. NSA Jake Sullivan will be in India next week after Defense Secretary Lord Austin prepares the ground for a possible joint production of GE jet engines with AGM. The agreement is likely to be announced on the 22nd of June, but this will come after a go-ahead from the US Congress. Now, though the stress is before Prime Minister Modi's state visit to the US, top American officials are visiting India to lock the final agenda of talks between President Biden and Prime Minister Modi. US NSA Jake Sullivan is traveling to India next week, but before that, Defense Secretary Lloyd Austin met his counterpart Rajnath Singh in Delhi. And all eyes are now on whether the two have been able to settle the big deal expected to be announced on 22nd June. The General Electric's Hindustan Aeronautics Limited agreement for joint production of their jet engines. What is still unclear, though, is if the United States is willing to allow General Electric to transfer single crystal engine blade technology. What is this? It's an advanced manufacturing process that ensures that engine blades made of titanium are of the highest quality under extreme heat conditions. This is considered the holy grail of jet engine technology. Very few countries have this. India wants it as a stepping stone to building our own world-class engines. India and the US concluded a new roadmap for US-India defense industrial cooperation, which according to the United States
aims to change the paradigm for cooperation between US and Indian defense sectors, including a set of specific proposals that could provide India access to cutting-edge technologies and support India's defense modernization plans. India is a major defense partner of the United States, wants to finalize the deal to manufacture General Electric F414 engines in India to power the Made in India Tejas Mk2 fighter and a stealth fighter called the AMCA, a deal for the sale of 30 state-of-the-art MQ-9B drones, a $3 billion purchase if it happens. While India is increasing its defense equipment purchase basket to include other countries like France, Israel, US over the years, apart from the traditional partner Russia, many others making a pitch for a piece in the pie. Germany is looking at selling ThyssenKrupp Marine Systems submarine to India, a deal of 6 diesel-electric submarines at an estimated cost of $5.2 billion. Boris Pistorius, the German defense minister, said, "We are talking about a deal of TKMS, about 6 submarines, but of course the procedure is not finished yet. But I think the German industry is at a good place in that race." The submarines under Project 75I will be built in India under a joint venture and transfer of technology with an international manufacturer. As is clear from that package that though the stress is on Make in India, but India is also actively increasing its defense equipment purchase basket. While this will mean reduced dependence on traditional defense partner Russia, it will also, in fact, bolster India's capacities in face of the growing Chinese threat. At least that's the expectation over here. Let's try and understand this a little more with our guest, who will be able to give us a sense now of what this visit of the Prime Minister might look like to the US and whether defense is really going to be the thrust of this partnership, at least this time around during the PM's state visit. Richard Rosso, Wadhwani Chair in the US-India Policy Studies at the Center for Strategic and International Studies, is joining us live now from the US. Many thanks for speaking with us. Richard, will the thrust clearly be on the defense sector when Prime Minister Modi visits the US? Defense will be highlighted. It'll be, along with critical technologies and people to people, one of the 3 areas I understand that will get major focus during the visit. We'd love to see increased cooperation. India really kind of is demanding access to intellectual property of U.S. defense material, not simply a buyer-seller relationship, but co-development. And a potential GE engine for fighters is really kind of the nodal there, but it's maybe some work on startups. But also looking at defense strategy. The kind of threats that we see from China are evolving. The different theaters are popping up in new and in different ways. And we need to find how we can collaborate together more effectively to make sure that the regional security remains stable and secure, which of course is underpinning such great commercial relations that are starting to bloom. Richard, I understand that this might also require clearance from the US Congress. What is the process like? My understanding is Congress shouldn't have to give a nod for this. The Department of Defense should have the ability and authority to sign agreements to allow co-development of technology. But it's a long road. We first announced the intention on looking at jet engine technology all the way back when President Obama visited back in 2015 for Republic Day. And it was very difficult to find a commercial arrangement at that time where both sides would be satisfied on sharing enough intellectual property, but at a level which a private entity that invested all this money, GE, would be comfortable with. But it does feel, since this program was re-announced earlier this year, there's new energy. It really has accelerated, and all eyes are certainly going to be watching closely on whether they've moved far enough to have a formal announcement during the visit. It appears so, and the fact that they're able to do so kind of shows that even things that just less than a decade ago were difficult to move under the current environment are moving much faster than ever were before. Richard, you already mentioned the common threat of China. The aggression of China is certainly one important aspect, and we are seeing that being one of the reasons for the kind of engagement in the defense sector between India and the United States also. But traditionally, Russia has been India's defense partner, and a lot of equipment has come to India from Russia.
is this also a move by the US to draw India away from Russia? Well, even before Russia's invasion of Ukraine, the United States wanted to prove its interest and value as a defense supplier to India. But of course, the relationship between the United States and India on defense goes well beyond the equipment that we may or may not sell or that we may or may not co-produce. We have a much deeper alignment on shared priorities, and that, of course, focused on China, whereas Russia is actually developing stronger relations with China during the current environment. The United States and India both, sometimes very different theaters. India is fighting a hot war with China in the mountains and has increasing concerns about China's increased naval presence in the Indian Ocean. The United States very focused on Taiwan Strait, South China Sea, Pacific Islands, East China Sea. So the theater, we may have some differences in terms of which we would prioritize, but China lies at the heart of it. And whereas Russia is looking to expand and build its relationship with China, the United States certainly would like to come in and be a better supplier and better partner to India, because we both agree that China presents the biggest threat that we're both going to face in the coming century. Richard Rossomei, thanks for speaking with NDTV. Now, as Richard was mentioning, is this collaboration between India and the United States largely looking at China, specifically in the Indo-Pacific? We've seen the coming together of the Quad as well with an eye on China, but now the modern warfare is largely going to be conducted in the sector of space, and therefore we are likely to see more collaboration between India and the United States to counter China in that area as well, in that space, if I can call it that way. There will be enhanced space tie-up under ISET. What is ISET? ISET is the Initiative in Critical and Emerging Technology. This was announced by President Joe Biden and Prime Minister Narendra Modi in May last year. Now, while this was announced, the developments have taken place only largely this year. What have we seen now? We've seen the Foreign Secretary, Vinay Mohan Kwatra, having gone to the US just this week itself, taking these conversations further and therefore looking at some of the tangible outcomes that could emanate from the visit of the Prime Minister as well. Now, what are we looking at going forward? The two sides to collaborate further, and this under the ISET as well, it will include global navigation satellite systems. This can be used for providing positioning, navigation and tracking. Now, this certainly is important for the reasons you can well understand, that it will be easy to be able to understand and provide positioning and navigation details in this area. Now, this also includes space situational awareness. Now, what exactly is that? This is a knowledge of the space environment, and it includes location and function of space objects. It's critical to protect communication, navigation and observation apps. And this certainly is very important, especially if we are talking of a situation of a conflict, of a war. Then now, if communication lines can be broken, then wars can be lost. And therefore, this is very critical to this entire modern warfare, where one can launch a warfare, in fact, without even moving their armies. This can be done in the cyberspace too. Human space exploration and commercial space partnership is also going to be part of the Indo-US tie-up in this space sector. Meanwhile, NASA and ISRO synthetic aperture radar NISAR mission will be launched in 2024. This has already been in fact announced and is in the works. NISAR can systematically map the Earth. It uses two different radar frequencies to monitor resources as well. These are critical resources which we are talking about, because it helps in aiding the mapping of resources like water, forest, agriculture. Remember, many also believe that the next war could be fought over water. So all these resources are very critical yet again. With this entire focus, we are seeing this collaboration between India and the United States in space as well, clearly with an eye on China. Well, that's it then for the moment in India Global. We'll catch you again next week on Friday.
आवास पेट्रोलियम और एवं प्राकृतिक गैस मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी उपस्थित हैं। आदरणीय पुरी जी से आग्रह है कि आप सबको संबोधित करें। थैंक यू। मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ। आज हमारा फोकस इस इंटरैक्शन का माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल के जो कार्यक्रम हैं, हमारी योजनाएं हैं और जो काम हुआ है 2014 से बाद का अभी तक, और जो ट्रैजेक्टरी है अभी हम आगे आने वाले समय में जो भी हमारी मैक्रो पिक्चर है और जो अभी तक जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे मैं चाहूँगा हम कुछ चर्चा करें। 2 पॉसिबल मॉडल्स हैं, या तो आप सवाल पूछिए और मैं एक एक करके जवाब दूँ। The other possibility is कि मैं थोड़े से आपको ओवरऑल ट्रेंड बता देता हूँ और उसके बाद मेरे पास कोई समय की कमी नहीं है, फिर हम बैठ के मैं आपकी जगह वहाँ बैठा होता और मेरी जगह कोई और बैठा होता, तो मुझे पूरा यकीन है कि 9 साल के कार्यक्रम के अलावा कुछ और दिलचस्प जो राजनीतिक टिप्पणियाँ लोग देते हैं उस पर भी आप शायद कुछ इंटरेक्शन करना चाहेंगे। मैं आपको बहुत ब्रीफ में मुझे जो लगता है कि हमारी ओवरऑल पिक्चर क्या है। सो आई पुट माई सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ एन इंडियन सिटीजन pre-2014, और मेरे लिए वो बहुत आसान भी है क्योंकि 2013-14 तक मैं ज़्यादातर बाहर था, न्यूयॉर्क में रहता था। और 2014 के बाद क्या हुआ? देखिए, ये वर्ड्स आर डिसेप्टिव। आप रेयर व्यू, फ्रंट व्यू, ऐसी चीज़ों की बात लोग करते रहे, पर सिचुएशन ये थी 2013-14 में कि भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल मतलब है कि 5 इकोनॉमीज विच वर ऑन शेकी फाउंडेशन। फ्रेजिलिटी आप मान लीजिए, आप अभी हवाई अड्डे में हवाई जहाज में जा रहे हो तो आप कन्वेयर बेल्ट में वो जब सामान लगा लेते हो, कुछ लोग लेबल लगा लेते हैं फ्रेजाइल हैंडल विथ केयर। जब एक पूरी इकोनॉमी में ये लेबल लग जाए फ्रेजिलिटी का, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टर होगा वो बड़े सोच समझ से कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाकी जो आपकी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, और सरकार कैसी, देखिए मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं उस समय आई वॉज पार्ट ऑफ द सिस्टम। मैं बात कर रहा हूँ जो 10 साल थे यूपीए सरकार के। Political decision making was by and large characterized by inaction or policy paralysis. ये थी उस समय स्थिति। और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग में एक तरफ से फ्रेजाइल 5 का ठप्पा और दूसरा हम ग्लोबल रैंकिंग में 10वें स्थान पे थे। उसके पहले 2008-9 से लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका था, इट केम आउट ऑफ इट।